लेते हैं तो दैट कोल कैन बी यूटिलाइज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, थोड़ी सी लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट इज हायर. देखें हम गैस से कंपेयर कर रहे हैं, गैस इज वेरी चीपर इन पाकिस्तान, बट व्हेन यू कंपेयर एज एन इंटरनेशनल मार्केट, व्हाट गैस यू आर टॉकिंग अबाउट, लाइक तुर्कमेनिस्तान की बात कर रहे हैं आप, आईपी पावर बात कर रहे हैं ईरान की, वो हम $8.5 और $9 की हम बात कर रहे हैं. तो आज पाकिस्तान की गैस की रेट $4 है. तो $9 की गैस हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम $4 की प्राइस तो नहीं रहेगी. सो द प्राइस विल गो अप डेफिनेटली, एंड इट इज अ सब्सिडी व्हाट हैज बीन गिवन टू द इंडिजिनस आप सोर्सेस समझते हैं कि दैट विल बी द बेटर सॉल्यूशन. इट्स अ बेटर सॉल्यूशन फॉर द कैप्टिव, इवन फॉर कैप्टिव एंड फॉर द इंडस्ट्री. और इंडस्ट्री को मूव करना पड़ेगा और बहुत फास्ट करना पड़ेगा. राइट. इंडिया इज वन ऑफ द एग्जांपल्स as far as captive power plants are concerned. It is said that in Gujarat there are so many companies, so many industrial units, and even so many commercial buildings where captive power plants have been installed and people are generating their own electricity and they are utilizing it also. And the reasons for the expansion of such projects is that the industrial power tariff is very high, and secondly unreliability of power supply also. In Pakistan, what do you see that why majority of the industrialists would go for captive power plants, and if somebody has, for example, a few industrialists have already invested, what could be the reasons? I'd say, we have set up several biomass-based power plants in India, and we also entered that market already. So, frankly speaking, Pakistan is facing similar problem like India. That is the power shortage. So that influences the production. So no matter from the government, no matter from the individual industries, they need to find solutions for this. So that's the reason why we are here. Do you feel that those business personalities who have invested so much money in captive power plants in India, particularly in Gujarat, are they satisfied? You have been visiting India, and do you feel that they are satisfied and they feel that the investment made is the right solution for them? I think so, because for no matter for this kind of customers, the most important is to confirm the continuous power supply, no matter from their private power plant or no matter it is from the government, the national grid, whatever. Once they can confirm the production of their factory, that means everything. Right. मुनीर साहब, वैंगे नेशनल ग्रिड की भी बात की, जो कैप्टिव पावर प्लांट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं हमारे यहाँ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनका कनेक्शन नेशनल ग्रिड से भी होगा ना. पावर सप्लाई अगर फॉर एग्जांपल कैप्टिव पावर प्लांट्स में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है तो वो बिजली खरीदते भी होंगे. हमने ये भी देखा है कि बाहर मुल्कों में अगर कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, उनके पास जब एक्सेस कैपेसिटी हो जाती है तो वो हुकूमत को बेचते भी हैं. यहाँ क्या है सिनारियो? लेकिन जी कैप्टिव पावर प्लांट जो हमारे यहाँ गैस पे चल रहे हैं, जो हमारी एक इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, वो बेसिकली उसकी पावर इज मच मोर चीपर देन योर ग्रिड पावर. तकरीबन प्राइस में कितना डिफरेंस? सर इज बिंग 40% लेस. So if your KEC unit or WAPDA unit is ₹9 and their cost is less than ₹6, so it's 40% less than what they are paying. पाकिस्तान में अगर हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात करें, खासतौर पे कराची की बात करें, तो कितने इंडस्ट्रियल जोन्स में आपके ख्याल में कैप्टिव पावर प्लांट? आप देखें कैप्टिव पावर प्लांट, एनी इंडस्ट्री विच इज क्रिटिकल इज ऑन कैप्टिव पावर प्लांट. So your major of them has captive power plant. They don't even have a grid connection. तकरीबन कितने ऐसे यूनिट्स आपको नजर आते हैं? कितने ऐसे यूनिट्स हैं? कितने हजार यूनिट्स? I can say is at the moment 2,000 megawatts is being running in Sindh only. Right. Is on captive power plant, industrial units. Right. So basically जो हम आप कह रहे हैं कि वो चीप, कॉस्ट भी चीपर है, ग्रिड महंगा है. ग्रिड महंगा इसलिए कि हमारे लाइन लॉसेस वगैरह आ जाते हैं. और एक्सपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, अभी भी कुछ कोठरी वगैरह में कुछ यूनिट जिनके पास एक्सेस पावर है, वो और ग्रिड के साथ सिंक है और वो ग्रिड को पावर एज पर रिक्वायरमेंट सेल भी करते हैं और किसी वक्त ले भी रहे होते हैं. सो बेसिकली जो कॉस्ट है वो कैप्टिव पावर की बहुत कम है एज कंपेयर टू द ग्रिड. सो पीपल प्रेफर टू गो ऑन basically captive power plant rather than going on grid. And the stability of the grid again is come to the energy mix. उसकी रिलायबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनके प्रोडक्शन लॉसेस हो जाते हैं. Right. और इंडिया से जब आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे वांग ने कहा, इंडिया के पास गैस की लग्जरी है ही नहीं. इंडिया इज ऑन डीजल. सो एंड योर एक्सपोर्ट इज ऑल्सो कम्पीटिंग विद इंडिया. So it's India is on diesel. When they work on coal, it's much more cheaper to use coal than the diesel. So they have developed that system of coal in their energy mix. यहाँ पे कहा कि 40% का डिफरेंस है.
इंडिया की वही बात करें कि वहाँ पे हम देख रहे हैं कि गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पे लगे हुए हैं, तो वहाँ कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट? जैसे आपने कहा कि वहाँ गैस की उनके पास लक्ष्य नहीं है। लेकिन जी वहाँ का जो डीजल का प्राइस है और उनका जो कोल का प्राइस जो कंपैरिजन में आता है इज हाफ ऑफ द कॉस्ट. So they are also they have got a coal reserve of 58 million tons of coal reserve over there, and as far as Pakistan is concerned, the BP report says is 2,500 or 2,300 million tons of reserve. So their energy mix was based on coal, and they are enjoying that. So we should also enjoy that because we have got a coal, and that coal can be utilized. नहीं, यही जैसे हमने बात की कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को आप समझते हैं कि गैस के अलावा कोल पे भी बड़े इजीली चलाया जा सकता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं. तो इन द डेज टू कम आप क्या कैसे सिनारियो देख रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ कराची के सनती जोन्स की बात करें, पूरे पाकिस्तान के सनती जोन्स की बात करें, तो आप समझते हैं कि तकरीबन हर इंडस्ट्री, हर यूनिट में हम कैप्टिव पावर प्लांट्स देखेंगे? देखिए ये कोल के साथ अगर आप बात करें तो यू नीड अ बिगर स्पेस. और कराची और सिंध की जब आप बात करते हैं, कराची में लैंड इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट टू बाय आउट. कोल plants require little bit bigger area. और gas के plants they need a very small area. You have to put up an engine, line gas is coming, it's very easy to handle. कोल के अपने मसाइल हैं, but आपके पास एनर्जी के पास आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है. you have to come up with some solution. Right. So Wang, what could be the solution in the days to come, as I've just talked to Muneer Saab regarding the raw material for captive power plants? Do you feel in the days to come in future in Pakistan, in all industrial units, all industrial zones, the people who will be investing in captive power plants, they will be running their captive power plants with gas or coal? Frankly speaking, the natural gas is a clean gas and much easier to be used. And no matter the running cost and the initial cost will be much lower if comparing with no matter the grade or comparing with the coal solutions. But the problem is the supply, continuous supply. So leave natural gas solutions away. Comparing with other solutions, coal gas based solution is a much better solution. Right. How much investment does an individual need to install captive power plant, and how much investment is required also for the pipeline? We have seen that काफ़ी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि हमने खुद अपने पैसों से पाइपलाइन बिछाई है. So there are industrialists who feel that they have invested themselves on the pipelines also, which get them gas from the companies which provide them with the gas. How much investment is required in Pakistan? Minimum requirement for captive power plant? Pakistan have a very big advantage comparing with other countries in the world that the coal here, the price is quite reasonable. It means much cheaper than other countries. That means this kind of same projects, if in China and if in Pakistan, the running cost and so on will be totally different. So is future of captive power plants in the industrial zones in Pakistan? Yes. Here we have already started cooperation with the government here in Taco area, and the UCG projects will be started very soon also. मुनीर साहब, गैस की जो पाइपलाइन कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से कहते हैं कि जी हमने तो 2 से 3 करोड़ रुपए सिर्फ गैस की पाइपलाइन बिछाने में लगाए, तो ओवरऑल कॉस्ट आपके ख्याल में मिनिमम कितनी आती है कैप्टिव पावर प्लांट्स की? लेकिन ये जो प्लांट डिफरेंट गैस के प्लांट्स हैं उसमें कैप्टिव पावर प्लांट वो इंडिविजुअल अपने लिए लगा रहे हैं, तो उसकी कोई लाइन इट्स बीन डायरेक्टली फीडिंग टू देयर सिस्टम. So it's an investment which is inside their factory, not for the outside. लेकिन फिर भी कितनी बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करते हैं वो लोग? लेकिन जी अभी हम जो गैस बेस्ड पावर प्लांट लगा रहे हैं कैप्टिव पावर प्लांट, वो $400 पर किलोवाट हमें कॉस्ट करता है अगर हम उसको ले लें. And if you go with a coal-based power plant, it will be more or less $800 to $850 a kilowatt. It's double the cost. But long term में जो coal आप डेवलप कर रहे हैं और आपकी माइंस डेवलप हो जाती हैं, तो that's a local coal available. So that can be utilized. जैसे हम नेचुरल गैस को हमने इस्तेमाल किया, and that's a raw material is cheaper today. Well, नाज़रीन, आज हमने बात की कैप्टिव पावर प्लांट्स के हवाले से. दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि इस तरह का रुझान है, खास पे इंडिया की हमने बात की. पाकिस्तान में भी काफ़ी ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पे कैप्टिव पावर प्लांट्स लगे हैं, गैस के जरिए या कोल के जरिए, वॉट एवर इज द सोर्स. इनफैक्ट हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों ने कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाए हैं, हमारे एनालिस्ट ने कहा कि उनको बहुत ज़्यादा सस्ती बिजली मुहैया है, लेकिन प्रोवाइडेड कि उनको गैस की फराहमी हो, या अगर कोल की बात करें तो कोल की फराहमी इन द डेज टू कम हो. शुक्रिया अदा कर जाऊँगा अपने मेहमानों का. वैंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर. मुनीर साहब, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लाए. नाज़रीन, आप अगर हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है gulsanbez@ptv.com.pk. तब तक के लिए इतना ही. कराची मरकज़ से अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.